Ciao, ciao. Good evening. कैसे हो आप लोग? Friday Night Live is here. Club football is finally back. ISL तो शुरू हो गया था already. आज I was just watching the game between Bengaluru FC and Punjab FC. Bengaluru winning by a goal to nil. But अपना main international break is over. And finally, after 2 weeks, we have some club football action. अपने सारे clubs लौट कर आने वाले हैं वापस. It feels good, man. I mean, I was just waiting for international break to get over. Nothing against it. Of course, some good games there in between. Lot of qualifier action in South America, in Asia, in Europe. But club football है यार. मतलब उसका बात ही कुछ अलग है. And of course, we have a lot of big games coming up this weekend everywhere. प्रीमियर लीग में तो आपका जो मार्की फिक्सचर है वो लिवरपूल चेल्सी है. सेरिया में तो आपका यूवे लाज़ियो है, रोमा इंटर है. टू बिग गेम्स इन सेरिया. हम लोग ने कल कैल्चियो चर्चा पे हमने प्रीव्यू किया था विद रिगार्ड्स टू दोस टू गेम्स. एंड यू हैव also Barcelona Sevilla, so that's also a decent game in La Liga. But let's see who's in the house. Ayan is here. कैसे हो Ayan? Good evening. Hope all is well. GGMU Webber is here. Good evening भाई, कैसे हो? आपके सवाल जो भी है आज कमेंट्स में लेकर आओ. आज एकदम थोड़ा चिल स्ट्रीम ही करेंगे, तो whatever questions you have, I'm more than happy to give all the answers. ये जो सफेद बाल है दाढ़ी में, उसका जरा फायदा उठाओ. करीबन 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है फुटबॉल स्पोर्ट्स में. तो आपको जो भी सवाल हो, मतलब आज चिल स्ट्रीम जैसे ही करेंगे अब हम लोग, तो आपको जो भी सवाल हो, लाइफ में भी कुछ भी सवाल हो तो लिख लीजिए, तो आई विल आंसर ऑल ऑफ दैट फॉर यू. बट लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट्स actually happening. Let's start from home India. Let's start with ISL, because ISL में you have a very big game coming up. Two big games coming up, of course, tomorrow, starting off the weekend with FC Goa versus Mumbai City. ये मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि डार्बी डेला सिद्धार्थ. सिद्धार्थ मेरा दोस्त है, मिलान फैन है. सिद्धार्थ यादव, he was working in Goa before. He's working with Mumbai City now. It's a personal derby for him. And then, of course, after that, you have the bada game, the Boro match between East Bengal and Mohun Bagan. Yeah, East Bengal are winless this season, so they would be obviously looking to avoid some embarrassment. And Mohun Bagan, to bhai, it's a derby end of the day, so they would want to establish that one up over that. It's going to be very interesting. I'll be watching both these games tomorrow. वॉच अलॉन्ग करूंगा कि नहीं पता नहीं, बट ये दो गेम तो मेरे है रेडार में with regards to Indian football at least. And weekend में you have another good game actually between Mohammedan Sporting and Kerala Blasters. So also this promises to be quite an entertaining game. So 3 good games coming up in the ISL weekend. आपके क्या predictions है वो भी लिख दो. I feel that it's going to be a Mumbai City win against Goa. It'll be a crazy game though. I think there'll be some goals in it, but I think Mumbai will emerge victorious. I hope so. And between East Bengal and Mohun Bagan, I feel that Mohun Bagan would easily win this game. Mohammedan Kerala could be a draw, could be a Mohammedan victory. It'll be difficult for Kerala Blasters. So यहाँ पे मैं थोड़ा draw and home win का मैं prediction रख रहा हूँ. Actually, let me change this prediction of FC Goa and Mumbai City. I feel that it's going to be a draw as well, because Mumbai City have not been in great form, and Goa का भी थोड़ा start stop है. Goa are at home, so maybe there would be an advantage. Hence, I'm going for a draw. But ये game में I'm going for a Mohun Bagan win for sure. What are your predictions? Leave a comment below. आपके भी जो comments हैं, hopefully predictions लाते रहो. Let's see what happens eventually. 2 weeks stress free हो गया. Of course, I'm United fan हो, but United are back in action. So stress is back. यार कुछ भी बोलो यार. It is end of the day you want to see your club play, right? So भले जो भी हो, win or loss, I think it's always good fun to see. So enjoy करो भाई. Man United का games enjoy करना, I know थोड़ा difficult है, but still. Ayan is here, went to see Ranji Trophy today. Had a great experience. Met Sandeep Sharma and Manan Vora in Guwahati. Badhiya yaar, badhiya. I'm so happy for you. I mean, it's always good to go to the stadium and see the games. And Ranji Trophy games तो है ही. मैंने भी आज just अपना ticket book किया है for the third test match between Mumbai, India and New Zealand at Mumbai in Wankhede Stadium.
I just booked my ticket, so I'll be going for the third test match. Let's see how many days I can get to go. Diwali weekend है, but I'll at least एक दिन तो जाके मैं देखूंगा यार. It will be my first test match. I haven't watched a single test match, so this is like a brand new thing for me after all these years. Good evening, Aditya. How are you, man? Mumbai City FC have been struggling, and so I predicted two all draw. Maybe that's why I changed my prediction. Even I'm going for a draw only because FC Goa are at home, and I think Mumbai ka thoda start has been not that great. They are missing a midfielder. I feel, in my opinion, they're missing a good six. They've not replaced Apuya very well, so मेरे को लग रहा है कि यार it could be a draw, high scoring draw, but प्रबल प्रताप सिंह, हेलो भाई, कैसे हो आप? आई थिंक यू न्यू टू द चैनल. इफ यू न्यू, सब्सक्राइब करो. Tunil Mohan Bagan is what Aditya is predicting. I think that's going to be like a one-way traffic. I don't think so. East Bengal, it'll be a huge upset if they pull it off, in the sense कि जो उनका season रहा है इनका अब तक. I think I think it'll be a miracle if they manage to pull out something from here. East Bengal, that is. Next vlog with Calcio Charcha members. Yeah, this is. I don't want to give a lot of details away, but Chintan and I had a call. तो हम लोग का कुछ प्लानिंग चल रहा है. अब देखते हैं वो कितना सफल होता है. आई होप दैट यू नो वो हो पाए, बट लॉन्ग शॉट है, बट कोशिश जारी है. Amazing video on David De Gea, but one personal opinion, video could have been better without the music. Actually, दिक्कत ये है कि ये जो StreamYard वाला वर्जन है ना, इसमें थोड़े bugs है इसमें, because ये free version है. मैं देखूंगा. I'll upgrade this. I will definitely keep this in mind going ahead. थोड़ा quality of production improve करना है, वो है मेरे दिमाग में. But definitely, Webber, I'll make a note of that. यार, Siddharth, let's go Forza. It's a big game coming up, and let's start from there. I mean, Serie A का जो weekend है is a very very big weekend in terms of the matches that's up there. Probably two of the biggest games in Serie A are Juventus Lazio and Roma Inter. भाई साहब, Roma Inter को तो मतलब I honestly don't know what to expect from this game. It's always been a game that एकदम आपको एज ऑफ द सीट पे छोड़ता है वो. यू नेवर नो वेयर द गेम इज गोइंग. अभी आप कल ही मतलब लास्ट सीजन का गेम देखोगे, व्हिच वाज देयर ऑल्सो's फर्स्ट गेम अगेंस्ट इंटर. Roma played well in the first half. I think HRB scored Inter's first goal, and then Roma kind of got back into the game, and Mancini scored the equalizer. El Sharabi scored the second goal. So 2-1 half time पे गया. But second half में, I think Inter just found another gear and scored 3 goals and won the game 4-2. So games between Roma and Inter have always been very very interesting. So I feel ये गेम में भी also you will have थोड़ा सा मेरे हिसाब से इतना गोल्स नहीं रहेगा, क्योंकि both teams would not want to lose. I feel it will be a low scoring game, but goals तो रहेंगे, because Roma's defense have not been great. Inter's defense in the league have been slightly shaky. So I think both defenses में थोड़ा gaps है, which I feel that at least you will have a goal scoring in both halves. But मेरे को ऐसा लग रहा है कि मे बी जस्ट रोमा विल ट्राई टू पुश अ लिटिल हार्डर इन दिस गेम, एटलीस्ट कम आउट विद अ ड्रॉ. आई मीन दैट्स द बेस्ट रिजल्ट. इफ यू गिव मी राइट नाउ अ ड्रॉ बिटवीन रोमा इंटर, आई वुड टेक इट. रियली आई वुड टेक इट, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इंटर को हरा पाएगी रोमा, बट अगर मुझे आप ड्रॉ दे दो तो आई विल टेक दैट राइट नाउ. आपके क्या कमेंट्स है? कमेंट्स लिखो. दिस इज द पॉसिबल लाइनअप्स बिटवीन these two sides. Abhi Dobbik has been past fit, so he's going to start. Lorenzo Pellegrini has got a lot to prove after that red card against Belgium. Dybala is also back. Brian Cristante to रहने ही वाला है. First name on the team sheet. Manu Kone is expected to start alongside him. Yeah, this is what I feel had to come थोड़ा सा पहले only. Angelino playing as a left wing back, because हम लोग ने देखा कि Angelino को लेफ्ट सेंटर बैक में खिला रहा था बोथ डेरोसी एंड इवान यूरिच. तो ये मेरे को थोड़ा सा इट्स नॉट हिज बेस्ट पोजीशन. आई कैन अंडरस्टैंड द थिंकिंग यू वांट टू इन्वर्ट अ फुल बैक, बिकॉज एंजेलिनो प्लेज क्वाइट हाई अप इन द मिडफील्ड ओवर हियर, बट boy, it wasn't working. Yeah, it really wasn't working. So I think it's better to play him in his natural position.
Inter ka to it is pretty much straightforward. The only question mark here is Barella because Barella was injured. He's just come back from an injury, but most likely he will start. And Baki you will have Hakan and Mkhitaryan. Mkhitaryan to खेलने वाला है, and Lautaro and Marcus Thuram up top. Darmian is the preferred choice, like Param was mentioning, as the right wing back in the league, whereas Denzel Dumfries plays in the Champions League. And DiMarco to खेलेगा coming after a very good performance in the international break. And इनका डिफेंस तो स्टैंडर्ड है, पवार्ड, एचआरबी एंड बास्टोनी. सो यार इट्स गोइंग टू बी अ केजी गेम. दैट्स व्हाट आई फील. वेरी टिपिकल इटालियन गेम रहने वाला है ये. मेरा प्रेडिक्शन 1-1 है. आपके जो predictions है वो लिख लो. लेट्स टेक सम कमेंट्स फ्रॉम द मीन टाइम. Yes, I read this news. Giovanni Carnevali is interested. CEO का पोजीशन वेकेंट है. मैं इसी वक्त ये स्ट्रीम में कहना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब as Roma CEO. Not yet. Maybe sometime in the future, but not as of now. Let me make that very clear. But yes, Ivan Juric ने confirm किया during his press conference that Dobbik is fit and he will be ready for this game. कैसे हो भाई? Ankit, Almighty Blues is here in the house. So happy to see you in the PL fan zone, brother. More power to you. I really like it. You're going strength by strength and करेंगे यार. I know थोड़ा अपना time clash हुआ था तो we've not been able to collaborate together, but let's do some content soon, man. But keep the good work going, brother. Ayan looks like a promising lineup, but we have to deliver on the pitch. End of the day, man. Paredes, I think, will leave because he's not a first team regular now. I think उसका time आ गया जाने के लिए. He will move back to Boca Juniors if not going to Saudi. Siddharth, this is a good question. I really think the key tactical adjustments here in this game will firstly have to एक डिमार्को को आपको nullify करना है because DiMarco is the main threat. वो left hand side में he's going to be extremely uh, crucial to kind of nullify because वो अगर आप एक ब्रिज कर सकते हो, so Darmian doesn't bomb up that forward उतना compared to DiMarco. That's where Inter's threat is. I feel even Marcus Thuram का जो ये सीजन एक अवतार आया है, he is much more direct. So he's not like playing on the left wing. वो center में है, he goes directly takes on the center back. So stopping Marcus Thuram, I think, is going to be very key for Roma. In terms of Roma's attack, I really see that link up between Dobbik, Dybala, Pellegrini needs to happen a lot more. Manu Kone's role will be extremely important in the middle of the park because Inter, Hakan Çalhanoğlu, आपको पता है कि regista है. He likes to have the ball at his feet, and you have Mkhitaryan who's got 3 lungs, keeps on running the entire game. So Manu Kone is single-handedly up against both of them. I say that because Brian Cristante है, but Brian Cristante है. But Manu Kone का role बहुत crucial रहेगा. So I think these are some of the key battles between both the teams. It promises to be very interesting, irrespective. आप अगर मतलब if you're not a Roma fan, if you're not an Inter fan or Serie A fan, I think you should just watch it because it's going to be a quality game between both these teams. I really feel, even if it's a 0-0 draw, now you will have a lot of things to learn. It'll be like a tactical masterclass. So, maza aega, bhai. Almighty Blues, both our teams are underdogs on Sunday night, but bring it on, absolutely, man. Liverpool, Chelsea, we'll speak about it in a bit. And then, of course, you have, I think this is pretty much what needs to be done. This is this is pretty much what needs to be done. Roma need to really enhance the defensive organization, which is why I feel that Angelino playing as a wing back would be a better option rather than playing in, as a center back. And they counter-attack to Hey, which is why you have Dobbik, the focal point, who needs to kind of fall back a bit, get involved in the game, in the build-up, and then spread the play onto his teammate. So, Bhai, it's going to be a very interesting game. Just watch it. Do not miss it for the world. Fair enough, Siddharth. I think these are very, very good analysis. Um, yeah, 0-0 draw, 1-1, Almighty Blues, fair enough. See, Inter are favorites, bhai. Ankit, Inter are absolute favorites. I feel that Inter uh, are expected to win this game. And I think that just plays to Roma's
hands as well, because Roma will have a point to prove at home at the Olympico. So 30 minutes के लिए कुरवा सूद नहीं रहने वाला, जो कर्व है जहाँ पे सारे रोमा के हार्डकोर सपोर्टर्स बैठे हैं, उन लोग नहीं रहने वाला. So 30 minutes के लिए the crowd support is not there, and after that you will have the Kurwa absolutely back in action, and I think that will push the players on. So watch along here, Aditya. Just planning to do this. I will keep you posted. Either it'll be on my channel or on Calcio Charcha. Just working on that. Thanks, Ankit bhai. Have a good one, and let's collaborate soon. Hope you have a good weekend, man. Let's move on to the Premier League. Premier League is back as well. काफी इंटरेस्टिंग. अभी जस्ट मैं ये बेंगलुरु पंजाब गेम देखने के पहले मैं अपना एफपीएल टीम को जरा सुधार रहा था. मैंने वाइल्ड कार्ड लिया है फाइनली, एंड आई हैव चेंज्ड माय टीम. बट just let's have a look at what's in store in the Premier League. You have Spurs versus West Ham kicking things off. Fulham Aston Villa, very interesting game. Ipswich Everton, Man United Brentford. Brentford वापस फर्स्ट या सेकंड मिनट में गोल मार सकते हैं, you never know. Newcastle Brighton, Southampton Leicester, Bournemouth Arsenal, Wolves City, Liverpool Chelsea, and then Monday Night Football, Nottingham Forest Crystal Palace. Yeah, obviously the big game here is Liverpool Chelsea, and it is I would say I was not expecting Chelsea to start this well. Let's be very honest with you. मेरे को सच में लगा कि थोड़ा एंजो मारेस्का में स्ट्रगल करेगा, इसको थोड़ा समय लगेगा, but to be fair, Chelsea have done really well, and Liverpool as well. This was supposed to be like a transition year from Jurgen Klopp to Arne Slot, but to be fair, they've really started well, and this brings about a very, very interesting battle between these two teams. So Liverpool, I don't think so they have any major absentees per se. जो मतलब जो है वो है. Mo Salah returning to play against one of his former clubs. So generally he plays well against Chelsea. Szoboszlai is in form. Hungary के लिए उसने 2 गोल मारे. Luis Diaz as well. So this is like a again probably two very, very different systems, because Arne Slot का जो system है is way different than Enzo Maresca systems. So you have a clash of two ideologies here as well. Mirko, I feel that this is so much of a European fixture than a Premier League fixture. That's what I feel. I think this Liverpool have always had this European flair about them, Chelsea as well. And you have two managers, with very distinct styles. Arne Slot built in the Dutch system and, had successes with Feyenoord. Enzo Maresca, relatively new in terms of experience, but obviously he's learned his ropes under Pep. And Chelsea के लिए तो उसने मतलब काफी over exceed किया expectation. And the one guy I'm kind of, obviously everyone is just waiting to watch is Cole Palmer. What a player, man! Absolutely धमाकेदार player है. One of the best players to watch for me as a non-Premier League, non-Chelsea, non-EPL fan. I enjoy watching these games. Obviously stress free, देखने मजा आता है. So I'll definitely have one eye on this as well on Sunday. And आपके क्या predictions है लिख दो. मेरे को ऐसा लग रहा है कि Liverpool might edge Chelsea on this by 3-1 or 2-1. चलो मैं वो इंटरनेशनल ब्रेक का ये था तो मैं थोड़ा ये करूंगा, but I feel that Liverpool will win for sure in this one. I just feel that Chelsea are little, I mean, I'm not saying anything bad against them. I just think कि Liverpool at home are a very difficult team to beat यार. तो वो एक चैलेंज है जो अब मे बी अगर ये थोड़ा और होता था या यूरोपियन फिक्चर के बाद होता तो शायद Liverpool would have been jaded out, but just coming after the international break just gives them a slight edge. This is just my opinion. But yeah, Shivam is like trapped, unfortunately, between office people in a boring party. But I'm predicting a 1-0 win for Inter and obviously Barca win. I'm glad Shivam यार तू tune in कर रहा है अपने stream को Friday night को. I know कि यार office parties रहता है Friday को. आज मेरा थोड़ा schedule relatively free था तो सोचा कि आप लोग से मिल लूं. काफी समय से चिल स्ट्रीम किया नहीं था तो थोड़ा एक चिल स्ट्रीम एंड फुटबॉल का चर्चा भी करेंगे सोचा था. But thanks so much for tuning in, man. Means a lot.
Reece James ka, I don't know. I don't think so. He will be thrown into the deep end because he's obviously coming back after a long injury. So the worst thing would be if he plays and gets injured again. But I think he will get some minutes for sure. हाँ लेफ्ट बैक पे विएगा खेलेगा अगेंस्ट सला. दैट्स व्हाट इवन सोफा स्कोर में दिखा रहे हैं द प्रेडिक्टेड लाइनअप दैट ही वुड बी पिप्ड अगेंस्ट पिटेड अगेंस्ट मोहम्मद साला. सो प्रबल का 3-2 प्रेडिक्शन है. ड्रॉ हो तो ठीक रहेगा यार. आई नो तू चेल्सी फैन है आदित्य, सो एज अ रोमा फैन मैं भी सोच रहा हूँ कि ड्रॉ होगा तो ठीक है बिकॉज obviously in both our games you have Liverpool and Inter starting as favorites respectively, but yeah, I think Sanchez had a good game also. Yeah, Sanchez had a good game last weekend, so I think he has his spells, but overall he's a good shot stopper. उतना तो मैं बोल सकता हूँ. Cucurella is injured, and that's why Viega is going to start. Chelsea have reportedly received a 190 million injection from the owners and formed new shares. यार पैसा का क्या करोगे भाई तुम. थोड़ा स्टेबिलिटी लेके आओ. थोड़ा I know lot of Chelsea fans who are old time Chelsea fans who just want their club back somehow. Money and all is good, but just bring some stability and make the club familiar again to the long term fans who are associated with the club here. But yeah, I mean that's pretty much it for Liverpool Chelsea. संडे नाइट है. संडे नाइट को काफी जगहों पे स्क्रीनिंग्स भी है. आई थिंक मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली. जनरली आई प्रेफर टू वॉच एट होम, बट अगर ऑफ कोर्स कैल्चो चर्चा के स्क्रीनिंग्स रहेंगे इन द फ्यूचर, सो वी वुड डेफिनेटली वांट टू डू दैट. कोडी गैक्पो या न्यूनेस में से कोई स्टार्ट कर सकता है? कर सकता है क्योंकि आई थिंक जो लिवरपूल चेल्सी के सेंटर बैक्स है आर क्वाइट फिजिकल. भले वो अडबायो हो या लुई कॉलवेल हो, तो मेरे हिसाब से ये गेम थोड़ा डार्विन न्यूनेस को खिलाएंगे ना तो मजा आएगा. इट बी लाइक अ लॉट फुल chaotic game रहेगा man. I mean Darwin Núñez brings that chaos into the game, and I think this game itself again a lot of very interesting clashes over the years. I remember 4-4 draw between both these teams. I think was it in the Champions League or something during the Jose Mourinho Benitez era. So ये chaotic game हो सकता है, and Darwin Núñez को खिलाएंगे तो chaos होएगा. As a fan, I want to see him start, but knowing Arne Slot, I think he will stick with Diogo Jota. I think. CB बेस्ट है लेकिन सांचेज पे भरोसा नहीं है. हाँ यार, करो यार भरोसा. Sanchez is not a bad keeper per se, but it'll be a difficult game because you expect a lot of shots coming in from Luis Diaz, from Mohamed Salah, and everybody. So it's not going to be easy for Chelsea, especially at Anfield. Right? Let's move to La Liga. क्या है La Liga में क्या चल रहा है दोस्त? What is happening in La Liga? कहाँ गए? नेक्स्ट वीक एल क्लासिको है. आई नो कि नेक्स्ट वीक एल क्लासिको है, बट ये वीक में आपका सबसे बड़ा गेम है बारसा वर्सेस सेविया ऑफ कोर्स. एंड Madrid I think play Celta Vigo. Yeah, so Madrid play Celta Vigo and Barca play Sevilla. Apart from that, Athletic Club Espanyol looks like a good game. Betis का Osasuna Betis है, Villarreal Hetafe है, Atletico Leganes है, Valencia Las Palmas. हाँ, इसमें तो clearly it is just one game which is like absolutely dominating, which is बारसा सेविया. बारसा को यार, बारसा बायर्न भी आ रहा है बहुत जल्द. आई मीन चैंपियंस लीग में यू हैव अ लॉट ऑफ फिक्चर्स कमिंग अप, सो वन आई इज ऑन द चैंपियंस लीग, बट वो थोड़ा अपन बाद में बात करेंगे. लेट्स सी हाउ बारसा गोना लाइन अप एज पर सोफा स्कोर. ये मेरा प्रेडिक्टेड लाइनअप नहीं है, सोफा स्कोर का है ये. तो यू हैव pretty much in form Rafinha playing. Lamine Yamal, I think उसको जो इंजरी जो भी स्केयर था वो it's not very serious if I'm not mistaken, and you have the man in form Lewandowski. Sevilla are I think 13th or 14th place if I'm not mistaken. लोग काफी पीछे है. कहाँ गया स्टैंडिंग्स? 12th प्लेस पे है. तो इस पे तो मेरा बायस है. मेरे को तो सेविया बिल्कुल पसंद नहीं है. आई एम नॉट अ सेविया फैन फ्रॉम that Monchi wala days when he was there, and of course the Europa League final that happened. तो बारसा 6-7 मारो यार, मतलब कुछ छोड़ो मत. जितना भी भड़ा से निकाल दो सेविया पे. 6-7 nil तो
चाहिए अपने को. मजा आएगा. At least as a Roma fan, I will have a lot of fun. Yeah, Prabal, I think Gavi and Araujo is back, but I don't think so. They will immediately play. Lewandowski and Yamal का small knock है. Flick should rest players as Bayern is coming and El Clasico is also there next week. But I think Lewandowski will play in this game. Lamine Yamal as well. So मेरे को लग रहा है कि he will start because क्या है कि आदित्य प्रबल the thing is that whenever a player gets a knock, you don't want, if the knock is not very serious and you rest that player, maybe it aggravates over some time. वो आपको match sharpness मिलता नहीं है. So you're coming after an international break. So international break के बाद में you're training, group training again. It takes some time for that dynamic, that team chemistry to come back again. So if you have a small knock and अगर वो knock treatable है, ज़्यादा serious नहीं है, manager would always want their star players to play, or at least the first team players to play, to get that chemistry, get the rhythm going again and again. So हाँ, rotation is important, but rotation can be after maybe like a 3-0 advantage. तब आप लेवेंडोस्की लमीन यमाल जो भी है आपको, तब आप उनको सब्स्टिट्यूट कर लो ताकि उनको भी रेस्ट मिल जाए. बट आई थिंक right off an international break, you would want your best players, or at least your first 11 players to start. Aditya, final win Barca. Zenatron Barca fan है, just want to win. Yeah, तोड़ के जीतो भाई Zenatron. मारो 6-7 गोल Sevilla के against. I want Sevilla to go into the Segunda division. They deserve that. Mihir bhai is here. What up? Udine se up for you, Mihir. Udine se Milan. क्या लगता है क्या होने वाला है between Milan Udinese? Lorenzo Luca is in form, and Udinese have been having a decent season. They have not been pretty bad, and Milan का है थोड़ा struggles, losing to Fiorentina, of course. So क्या होगा between Milan Udinese? Let me know in the comments. But yeah, I think that's pretty much La Liga for you. Let's move on to Bundesliga. Bundesliga में कौन से fixture सही है यार? You have Bayern Stuttgart. This is a good game. This is a very good game coming up. And of course, Bayer Leverkusen and Eintracht Frankfurt is also a very good game. ये दोनों गेम में काफी मजा आएगा. And just for the atmosphere and the fans, Dortmund versus Saint Pauli. ये आज रात को है ना? अरे हाँ, आज रात को है ये. तो सही है यार. आज तो हो नहीं पाएगा देखने के लिए, बट हाईलाइट्स तो डेफिनेटली देखूंगा एक गेम का. काफी इंटरेस्टिंग गेम रहेगा. बट या आई थिंक अगर आप टाइटल रेस की बात करोगे तो you have two big games, which is Leverkusen and Eintracht Frankfurt, and Bayern and Stuttgart, that will set the Bundesliga title up. Look at this guy, man. Michael Olise, what a signing he's been for Bayern. And Leipzig का कौन सा गेम है? Leipzig play Mainz. ठीक है, that's an okay game. Wolfsburg, Bremen, two former Bundesliga champions. मेरे टाइम में I have seen both Werder Bremen and Wolfsburg win the Bundesliga. Bremen में तो उस समय में you had Diego, जो ब्राजीलियन था, मिरोस्लाव क्लोजा था उन लोग में, Werder Bremen में. And Wolfsburg में तो you had Edin Dzeko and Grafit. I'm going to make a video on Edin Dzeko very soon. He deserves a Dear Edin Dzeko video. Probably sometime soon I'll be making that video. Bosnian Diamond. So Bundesliga में if any one of you want to tune in, I would recommend 3 games. एक तो है Bayern Stuttgart, एक Leverkusen Frankfurt, और आज रात को देखो Dortmund Saint Pauli, just for the atmosphere and the fans. Saint Pauli fans पागल है एक नंबर के, मतलब उन लोग कुछ भी जाके हरकत करते हैं. एंड Dortmund fans तो आप लोग को पता ही है कैसे है. तो वैसे भी क्लब फुटबॉल का ये, मतलब यूरोपियन फुटबॉल का शायद ये पहला गेम है, वन ऑफ द फर्स्ट गेम्स. सो आज रात को 12 बजे सोनी लिव पे है, तो आप जाके देखना Dortmund Saint Pauli. दिस इज जस्ट माय रिकमेंडेशन. मूविंग ऑन टू फ्रांस लीग में अरमान का मोनाको टॉप पे. आई होप दे रिमेन देयर. PSG सेकंड, मार्से थर्ड. पॉल पॉगबा मार्से जाएगा ना, तो मतलब सच में डिजर्बी इज असेंबलिंग द सुसाइड स्क्वाड. Liga is on GXR World. It's for free. I think this is a good game between Monaco and Lille. अच्छा, ये भी आज रात को है यार. आपको आज रात को 2 अच्छे गेम है जो आप देख सकते हो. मोनाको लिल, ये GXR वर्ल्ड में फ्री है.
ये भी देख लो आप अगर आपको समय मिले. And otherwise, not very interesting games apart from as a neutral. Obviously अगर आप कोई टीम को सपोर्ट करते हो, अगर आप फ्रेंच फुटबॉल ज़्यादा डिटेल में देखते हो तो यू मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, बट जस्ट एज एन आउटसाइडर मॉन्टपेलियर मार्से, कुछ है ही नहीं यार इसमें, कुछ मजा ही नहीं है. चैंपियंस लीग में क्या आ रहा है? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप इन द चैंपियंस लीग. चैंपियंस लीग इज बैक मिडवीक में, राउंड 3. You have Arsenal, Shakhtar, Aston Villa, Bologna. ये सच अ फीफा गेम है. फीफा में हम लोग रैंडम टीम्स लेके खेलते हैं. अब दोनों चैंपियंस लीग में आए हैं. यूवे स्टुटगार्ट इज गुड. Madrid Dortmund, that would be a good game, man. Very very good game. Atlanta Celtic also has got all the hipsters very very happy. और कौन से हैं? Leipzig, Liverpool, Young Boys, Inter. Not a great deal of games, like, eye-catching fixtures in the Champions League. Maybe Madrid Dortmund is like the biggest game between, like, two big sides. Arey, shit! How did I miss this? Of course. I'm sorry. Barca Bayern is the biggest game. How did I miss it? Madrid Dortmund and Barca Bayern. So La Liga versus Bundesliga है. अरे भाई साहब, Hansi Flick, मजा आएगा. I think more than anyone else, Barca fans would be looking forward to the return of club football, because Sevilla, Bayern, and Madrid in like 1 week's time. मजा आएगा. हाँ, super fun. So Champions League में ये दो गेम बढ़िया है, Madrid Dortmund and of course Barca Bayern. यूरोपा लीग में क्या है? यूरोपा लीग, मेरे को ये यूरोपा लीग जब मैं खोलता हूँ ना, देखो सच में बोलता हूँ, ये जब देखता हूँ लाज़ियो फर्स्ट, इतना दिमाग का दही होता है ना, आई कांट टेल यू. आई एम जस्ट कंट्रोलिंग माय एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन राइट नाउ. एंड लुक एट दिस, रोमा 27th, लाज़ियो फर्स्ट, रोमा 27. मतलब क्या गंदा मजाक कर रहा है यूनिवर्स मेरे साथ में. बट एनीवेज, गेम्स की बात करें, लेट्स सी व्हिच आर द आई कैचिंग गेम्स कमिंग अप. रोमा डायनामो कीव. Oh, this is at 10:15. Maybe I can do a watch along. इसका watch along करेंगे दोस्तों. रोमा डायनामो की अच्छे टाइम में हम लोग करेंगे इसका watch along. अरे भाई साहब, फेनरबाचे मैन यूनाइटेड, जोसे मोरिनियो वर्सेस मैन यूनाइटेड. इट्स गोइंग टू बी क्रेजी. मोरिनियो वर्सेस टेन हाग. इस पे एडिन जेको गोल मारेगा, इस पे पैसा डाल दो आप. एक गोल तो जेको मारने ही वाला मैन यूनाइटेड अगेंस्ट. आई फील फेनरबाचे ये गेम में अपसेट मारेगा, 3-2 या 4-3 ऐसा गेम निकालेगा मैन यूनाइटेड अगेंस्ट. मोरिनियो है भाई, मोरिनियो वर्सेस टेन हाग. मजा आएगा. आई थिंक दिस इज व्हाट ऑन थर्सडे नाइट, सो फ्राइडे मॉर्निंग 12:30 को. बॉस, दिस गेम इज गोइंग टू बी क्रेजी. टॉटनम, एजी अल्कमार, लियोन, बेशिकताश, बाकी सब बकवास गेम है. ये दिस गेम इज द स्टैंड आउट गेम, फेनरबाचे मैन यूनाइटेड. एंड ऑफ कोर्स रोमा प्लेइंग डायनामो कीव. इसका मैं मोस्टली लाइव वॉच अलोंग करूंगा, तो join me for this particular watch along. Yeah, I think that's pretty much it. Club football is back. मैं आप लोगों के comments देख के I will kind of end the stream and leave you guys to enjoy Friday night. मिलान के बारे में बात करो. क्या तेको सुनना है मिलान के बारे में, बता दे भाई. हम लोग ने 2 वीडियो किया. माल्दीनी डायनेस्टी पे एक वीडियो किया, जहाँ पे हम लोग ने वी स्पोक अ लॉट अबाउट मिलान. ऑफ कोर्स बिकॉज Paolo Maldini is, is Milan. At least for me, he represents everything that AC Milan is. Growing up, Milan and Maldini were synonymous. दोनों एक ही हुआ करता था. And डैनियल माल्डिनी को मैं सबसे ज्यादा रेट करता था, बिकॉज मेरे को सच में अभी भी लगता है कि देयर इज अ वेरी गुड प्लेयर आउट देयर. मे बी नॉट अ बैलन डॉर विनर पर से, बट अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, वेरी टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर. एंड जो उसके साथ मिलान में हुआ, आई थिंक इट वाज अ बिट अनफेयर. There are, even right now in Milan, there are players who are of inferior quality to Daniel Maldini. I really feel कि उसके साथ जो किया मिलान ने, बहुत ही बुरा किया. एंड उसका करारा जवाब ऐसा डैनियल माल्डिनी दे सकता है कि अगर वो इंटर ज्वाइन करे एंड मिलान को मिडिल फिंगर दिखाए, ये हो सकता है. सो डेफिनेटली दिस कुड हैपन. आपका बैक स्टोरी का वीडियो नहीं है अब तक. आई विल रिमाइंड यू इन एवरी स्ट्रीम. तो मिहिर, I have shot the backstory video
and it is right now under editing, so it's going to come out very soon. So this I can confirm. It's a here we go. वीडियो शूट हुआ है, बस अभी एडिटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है. आज ही मैंने डेविड डेहया का वीडियो मैंने रिलीज किया, जो कॉस्टअप के साथ आई डन अ चैट अबाउट डेहयास काइंड ऑफ रिवाइवल एट फ्योरेंटीना. सो दैट वीडियो इज आउट राइट नाउ, एंड ये वीडियो शायद नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा. थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम टू एडिट दिस वीडियो, बिकॉज इसमें बहुत सारा मैंने तू बिलीव नहीं करेगा मिहिर, मैंने एक 13 मिनट का मोनोलॉग दिया हुआ है. जो जनरली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ऐसे ऐसे काइंड ऑफ वीडियोस, तो आई आई राइट इट डाउन लाइक आई डिवाइड इनटू हाफ्स, कि मैं 4 मिनट इसके बारे में बात करूंगा, 2 मिनट इसके बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन you merge it in and edit it. But in this particular video there is a raw clip of 13 to 14 minutes where I've not stopped talking. So it's going to come out soon. It's a very very interesting video. I hope that you all like it, because सच में मैंने उसमें अपना पूरा हार्ट ओपन करके डाल दिया, बिकॉज इट इज दैट काइंड ऑफ वीडियो, राइट? सो मेनी मेमोरीज केम बैक टू मी. तो उसमें दो दो हिस्से हैं. एक तो पार्ट है व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग रोमा, एंड सेकंड इज द एक्चुअल नरेशन ऑफ व्हेन आई वेंट टू रोमा, वेंट टू रोम. सो वो भी एक पार्ट है. सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ वीडियो, बट इट विल कम एज वन वीडियो ओनली. सो दिस इज गोइंग टू कम आउट सून. एडिटिंग इज ऑन, बट आई एम हैप्पी टू से कि शूटिंग हो गया है, उसका स्क्रिप्टिंग और राइटिंग और शूटिंग हो गया है, बस अभी एडिटिंग बाकी है. Sule is going to remain with Roma. I'm assuming you're talking about Matthias Sule, so he's going to remain at Roma for sure. Tunnel Bayern. Okay, Aditya. क्राइफ को खेलते देखा है आपने? नहीं, आई हैव नॉट सीन योहान क्राइफ पे. इतना भी बूढ़ा नहीं हो भाई, बट ऑफ कोर्स उसके हाइलाइट्स वगैरह देखे. आई हैव हैड द गुड फॉर्च्यून टू सी रोबर्टो बाजियो प्ले. बाजियो वाज इन हिज फाइनल डेज एट ब्रेशिया, फाइनल डेज ऑफ हिज प्लेइंग करियर. तो बाजियो को तो देखने मिला, बट योहान क्राइफ अनफॉर्चुनेटली थोड़ा मुझसे पहले वो रिटायर हो गया फुटबॉल देखने के पहले. किमिच का क्या लग रहा है? आई वांट हिम इन बारसा, बट लग रहा है रिन्यू. इवन आई फील दैट ही विल रिन्यू. बारसा में देखो यार, प्लेयर्स साइन करने में कोई इशू नहीं है, बट वो जो उनका रजिस्ट्रेशन है, ये बहुत इश्यूज है ऑफ द पिच, which needs to be sorted for a player like Kimmich, and I think he will end up probably staying in Germany only. Strasbourg draw करो यार. हाँ, बारसा बायर्न, yes of course बारसा बायर्न को पहले यार. मेरे को ऐसा लग रहा है कि मे बी बारसा विल विन अगेंस्ट बायर्न. लग नहीं रहा है, लिख के ले लो. आई फील बारसा विल बीट बायर्न. I just have a feeling. मदद को भी याद रखना. हाँ, ऑफ कोर्स बारसा का तो है ना 3 अच्छे गेम है, सेविया, बायर्न और मद्रिद. यार यूनाइटेड का छोड़, लाज़ियो नंबर 1 है. Man, I had Roma to win Europa League, but that prediction is gone. Yeah, still can happen. It's still just like 2 match days into it, so है time है to recover. Anything can happen. कॉन्फ्रेंस लीग देखिए, कोई मतलब नहीं भाई. अगर चेल्सी नहीं जीती ना कॉन्फ्रेंस लीग, तो मतलब क्या बोलूं यार. यू शुड जस्ट फोल्ड एज अ फुटबॉल क्लब. इट्स द मोस्ट विद द मनी दैट चेल्सी हैव. आई थिंक मैं वो दिन पढ़ रहा था कि जितना चेल्सी का ट्रांसफर साइनिंग अमाउंट है is higher than all other conference league clubs, something like that. So yeah, this is your competition. You better win it. बारसा में कुछ नहीं चाहिए. I believe in Hansi. Fair enough. Todd Boehly to Genoa. Yeah, there are rumors that Genoa might be brought. So let's see. He might really join Inter to make international headlines. Daniel Maldini. Yeah. Yes, the video will be out soon. Maldini to Inter बहुत अजीब लगेगा. And yeah, I know, man. It's going to be very crazy if this happens. Ultimate kind of like betrayal. अरे आयुष भाई, आप कैसे हो? चेल्सी लिवरपूल का जस्ट थॉट्स मैंने जस्ट दिया था, बट आपके लिए दोबारा मैं वही बोलूंगा कि लिवरपूल आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एट होम, एंड फॉर मी एज अ न्यूट्रल, आई लव वाचिंग दिस फिक्सचर बिकॉज सच अ यूरोपियन फिक्सचर doesn't feel like it's a Premier League fixture. Two sides with a lot of identity. Very surprised by Enzo Maresca, and his approach to the game has been very refreshing. And Chelsea have been, मतलब एक उनको re-energize हो गया उन लोग. And I just feel that it'll be a close game, but Liverpool have enough quality to win on the night. And I wouldn't be surprised if Mohamed Salah
gets into the act against his former club once again. मैं FPL में सलाह को कैप्टन कर रहा हूँ. I know कि Haaland and City have Wolves, but I'm still going for a Salah captain just for the भाई हो गया बस बारसा beating Bayern. I think Laporta will sell one huge player and take huge money basically just for a financial deal. That also could happen. Yeah, this was very good. I saw this picture and passing on the torch. Here's my brother. He's a Chelsea fan. Chelsea won't lose at Anfield. It's on. I'm going for a Liverpool win. Salah will not blank. I'm captaining him. He will not blank. एक मिनट मैं अभी तक किया नहीं हूं मैं अभी स्ट्रीम में कर रहा हूँ ये आई एम डूइंग दिस राइट नाउ लेट मी गो एंड कैप्टन सलाह राइट नाउ कहाँ गया सलाह confirmed done so as you can see Salah कहाँ गया Salah captain Mohamed Salah captain this is my FPL team by the way if you can see I have Cole Palmer as well but Salah is got a captain सत्तू का प्रोटीन शेक में अभी सत्तू नहीं था वो इट वाज अ ब्रांड कॉल कॉस्मिक वेलनेस सत्तू का इतना नहीं है प्रोटीन भाई लोग उसमें थोड़ा आप जानकारी दो हैव अ प्रॉपर प्रोटीन शेक प्लांट प्रोटीन के बहुत ऑप्शंस है आजकल मार्केट में जो मैं ब्रांड यूज करता हूँ वो है कॉस्मिक्स वेलनेस तो अगर चाहिए तो मैं तेरे को लिंक दे दूंगा थैंक्स मैन थैंक यू सो मच बस आखिरी कुछ कमेंट्स देके मैं स्ट्रीम क्लोज करूंगा आपके जो भी थॉट्स है आप दे दो विल क्लोज द स्ट्रीम एंड हेड इनटू एन एक्शन पैक्ड वीकेंड any last comments just leave that and let's see just let me show you what's on the YouTube channels मैंने एक दाविड डेहा का वीडियो जस्ट अभी अभी रिलीज किया हुआ है तो आप जाके वो देख लो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो स्पीकिंग अबाउट हिज रेनेसांस बैक सेविंग 3 पेनल्टीज इतना उसने पेनल्टी सेव ही नहीं किया था मैन यूनाइटेड में जितना उसने काइंड ऑफ Fiorentina में किया हुआ है so that video is just out I'll just share that link just a second कहाँ गया भाई and apart from that obviously weekend में we will have some live streams keep an eye out for that we will be doing Roma Inter for sure because Roma Inter है ही ऐसा गेम जहाँ पे we need to live stream that Param will be there I'll be there and we'll have a lot of fun रोमा का डायनामो कीव वाला गेम यूरोपा लीग वाला गेम को भी मैं स्ट्रीम करूंगा वो मेरे चैनल में करूंगा तो वो एक बार देख लेना आप लोग एंड या जस्ट लास्ट फ्यू कमेंट्स एंड देन वी विल क्लोज द स्ट्रीम let me just show you that David De Gea video that I was talking about this video I have made with Kostub is a journalist with Get Italian Football News and he's a Man United fan and a Fiorentina fan so we've spoken about David De Gea and his kind of rebirth in Fiorentina. Good to see, yaar. Matlab, you never want a player like De Gea to kind of, fall down from grace per se, but एक last dance करके वो अच्छे से retire हो. At least मैं चाहता हूँ वैसा हो as a fellow goalkeeper. And India New Zealand के बारे में भी वीडियो आएगा. Just for your information, I have booked tickets for the India New Zealand third टेस्ट मैच इन मुंबई वानखेड़े आई विल बी गोइंग फॉर दैट तो अगर आप लोग वानखेड़े आ रहे हो तो आके मिलना मुझे फॉर श्योर मैं आप लोग को मिलना चाहूंगा एंड यस देयर आर अदर कंटेंट एज वेल ऑन द चैनल आई जस्ट वॉच द विंस मैकमैन डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स मेरे को अभी एक WWE का वीडियो करना है तो देखते वो भी जरा इन वर्क्स है मेरा जो स्टोरी है बैक स्टोरी ऑफ हाउ आई बिकेम अ रोमा फैन दैट वीडियो हैज बीन शॉट इट्स इन द एडिटिंग जोन राइट नाउ वो एडिट होके आ जाएगा बहुत जल्द बिकॉज वो मेरा प्रॉमिस था कि जब 1K सब्सक्राइबर्स होगा तो आई विल ब्रिंग दैट वीडियो आउट टू यू आई एम ऑल्सो इन द वर्क्स ऑफ डिजाइनिंग अ फुटबॉल टी शर्ट वो जब होगा तो वी विल ऑल्सो डू अ दिवाली गिव अवे सो वो भी मैं अनाउंस कर रहा हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन केस यू डिडंट नो आई हैव अ व्लॉग्स चैनल एज वेल तो मैं ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह शूट करता हूँ एंड मैं शेयर करता हूँ आई जस्ट वेंट टू धर्मशाला so that's the latest video that's out almost a week ago मैंने ये release किया था तो it is Ajay Menon vlogs over here
search karo Ajay Menon Vlogs, subscribe to it, and watch the videos here as well. Uh, God has been kind. I've been lucky enough to travel to a lot of places like Kenya, like Kashmir, Haryana, Dubai, हिमाचल ऑफ कोर्स, एंड थोड़ा बहुत मैं मुंबई में भी घूमता हूँ, तो मुंबई में भी थोड़े आपको वीडियोस मिल जाएंगे ये वाले चैनल में, जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ कंटेंट. Ajay Menon Vlogs is the channel. Subscribe to it and share it with your friends. So that is pretty much it. Last few comments and उसके बाद मैं close करूंगा ये. Thanks a ton, man. Forza Roma sempre. Storytime videos, please, for sure. More stories coming up. I have a few stories lined up. As I mentioned before, मेरा खुद का story है, एक एडन जेको का story है, तो काफी कुछ आ रहा है. Just hit the bell icon so that you don't miss any video. Night Night Bikes. Always loved De Gea. He was a top-notch shots keeper, which is why I'm very happy that he is resurgent in Fiorentina. Thanks, Mihir. Ciao, ciao. Good night. Thanks, Aditya. यार रवि भाई, unfortunately it is over, but I'll see you guys soon. गोल्डन प्ले बटन कैसे मिला? एक्चुअली वो सिल्वर प्ले बटन है. मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट किया था 2021 में. तो एक मैंने दो फ्रेंड्स के साथ मेरे वी हैड स्टार्टेड अ चैनल. शी इज अ टेलीविजन एक्ट्रेस, सो उसका काफ़ी पॉपुलैरिटी है. तो आवर चैनल बैक देन गॉट अ सिल्वर प्ले बटन, बट बिकॉज ऑफ द लाइट इट लुक्स लाइक अ गोल्ड प्ले बटन. सो दैट चैनल वाज कॉल्ड फोर व्हीलर स्कूटर. आजकल हम लोग वीडियोस पोस्ट नहीं करते उसमें, वो हम लोग ने बंद कर दिया आफ्टर द लॉकडाउन एंडेड. But that's how I got into YouTube, and I'll probably make a video on that as well. That's a very good story for some other time. But that's it for tonight, guys. I'll be back soon. Keep supporting the channel and subscribe to both Calcio Charcha and my channel. Content आता रहेगा, बहुत सारा फुटबॉल है weekend में. So I'll see you guys on the weekend and host of videos coming up ahead. Until next time, I'm Ajay Menon. Enjoy your Friday night. Good night. Ciao, ciao.